till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what. गाइस ठंडी ब्रिज कर दिया हमने क्रॉस। अब आएगा केलोंग। मिलते हैं केलोंग में, बाय। तो फाइनली गाइस केलोंग पहुंच गए और ऊपर से नहीं जाके नीचे से जा रहे हैं हम एडवेंचर। ये देखो तेरा मेरे तो ऑफ मिला। So guys, this is केलोंग। हम केलोंग विलेज के अंदर इंटर कर चुके हैं। हाईवे ऊपर से जा रहा है। अभी हम केलोंग विलेज के अंदर हैं और ये देखिए, दिस इज एक्चुअल एडवेंचर। दिस इज द लाइफ ऑफ द लोकल विलेजर्स, completely frozen for 6 months, no water and no road transport properly. After Atal Tunnel, all this has opened, but still the locals who are living here, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें हैं यहाँ पे। अभी आपको आगे और ज़्यादा ब्लैक आइस मिलेगी रोड के ऊपर, जिसकी वजह से गाड़ी 4x4 के अलावा नॉर्मल गाड़ी तो चल नहीं सकती। गाड़ी तो दूर की बात, पैदल इंसान भी पैदल नहीं चल सकता। देखिए ये सारी ब्लैक आइस है। तो दिस इज कम्प्लीटली आइस। वी आर एक्चुअली वॉकिंग ऑन द आइस, ड्राइविंग ऑन द आइस। ब्लैक आइस कम्प्लीटली। ये देखिए सामने से गाड़ी आ गई है और हम स्टक हो चुके हैं। अभी पता नहीं हमको आगे करना पड़ेगा या उसको पीछे करना पड़ेगा या क्या होगा। तो अभी देखते हैं क्या होता है। गाड़ी पूरी तरह से फंस चुकी है हमारी। नहीं, वो पीछे गया, वो पीछे गया। बहुत अच्छा शॉट आएगा सर आपके ब्लॉग के लिए। ये गिरा गाड़ी तो आ रही है।
एक सेकंड रुक। बाय, आप आ जाना पैदल। एक रील बनाना मेरी रोक पे, ऐसे करके रील बनाना। Wish all the hashtags, likes and tweets would find a way to get lost. Yeah, and when I pull up to the scene, I wonder what the hell is the cost. And yeah, I know you never seen nothing like this before. Yeah, but this is a much, and I deserve to find some self-comfort. So find a way to ऐसे कुछ नज़ारे कंटिन्यू चल रहे हैं। आप भी देख देख के बोर हो रहे होंगे, पर सच में मस्त व्यूज़ हैं। आप देखते रहो। जिस्पा पहुंचने वाले, जस्ट 10 मिनट का रास्ता जिस्पा का है। वीडियो में बने रहे, नया हो तो सब्सक्राइब करो गाइस, लाइक करो और कमेंट्स करो। और चलो आगे जिस्पा दिखाता हूँ गाइस। स्प्लैश की बूंदें जो ग्लास पे पड़ी थी वो सारी फ्रीज हो चुकी है। दिस इज आइस, ये सारी जम चुकी है। रनिंग कार में उड़ती हुई पानी की बूंदें जम गई है। बाहर का टेम्परेचर अराउंड -15 होगा। एंड वी आर गोइंग। पूरा लपेट देना आप ब्लैंकेट में। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वैसे तो हम सिर्फ 30 सेकंड के लिए बाहर रहेंगे, बाकी घर में घुस जाएंगे, पर वो 30 सेकंड भी बहुत ज़्यादा होते हैं इसके लिए। हाँ जी हाँ जी। तो वो पूरा लपेट के और सीधे मैं गेट खोलूँगा, वैसे सीधे आप हेलो वी नीड टू गो मैम, व्हाट डू वांट। तो गाइस ये है कैमूर, जो जिस्पा से पहले ही पड़ता है। आपको एक ये हटने के लिए नहीं बोल रहा, मतलब हॉर्न दे दो ना। आने दे, कोई टेंशन नहीं। हाँ अब चला जाएगा।